हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे आज के हमारे इंटरनेशनल मेंटोरशिप के लिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप जल्दी से अपने टीममेट्स को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एक छोटा सा कॉल कर लीजिए ताकि वो जल्दी से इस मीटिंग को ज्वाइन कर ले। बिकॉज आज का जो सेशन होगा, आज ऑलवेज वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। माइकल कैस विल बी टेकिंग टुडेज सेशन एंड आपको और आपकी टीम को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। So it's very important to for you to join and of course for your team to join. It's equally important. So quickly आप अपने टीममेट्स को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, आपके जो भी आपके पर्सनल ग्रुप्स हैं और टीम ग्रुप्स हैं उन पे भी जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, रिमाइंडर डाल दीजिए ताकि वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर ले। ठीक है, एंड वील स्टार्ट द सेशन जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल। सो क्विकली आप अपनी टीममेट्स को ज्वाइन करा लीजिए। So, hi Michael, I hope you're doing good. I'm doing well, thank you. Amazing. So, Michael, so far, how is your interaction going with India's team, and how is your experience teaching us Indian market? Uh, I mean, it's been good. I've been doing a lot of the talking. I haven't had an opportunity to really hear from everyone. So I think once I go out there, it's gonna be nice to get the back and forth dialogue. We've had some questions come in, but I'm sure there'll be more when I get there. Definitely, we are looking forward to meet you in person. Okay, so let's start the session. People will join in like few 1-2 minutes so that you can proceed. Okay, excellent, excellent. Yeah. So this training is not going to be too long. I think sometimes people think that the longer the training, the better. I feel the shorter the training, the better, because we're getting straight to the point. A lot of this stuff is it's not really explaining it. It's just there's just work involved, right? You just got to do the work. I do want to show you guys this. This is interesting. Okay. This is an email. I found this email from my job right before I started working at USANA. So this was an email that was sent out. So I used to work because, I used to work for this company way back when, right? Look at the date on the email. Check it out. It says March 4th, 2005. Okay. So that's probably about a few months before I got started. And if you look here, it says Pickred has many great minds, and we want to compensate our employees for their ideas that contribute to making our company more efficient. We want to announce that one of our employees had an idea to make our company money and bring a higher caliber of employees. So I was hiring people for this company back then. Okay, so I was hiring, training, firing, doing all of that stuff. This is like a 9 to 5 job. Okay. Um, his idea has brought our costs from $2,000 a month to $29 a month, and we're getting just as many applicants. He was not told to do so, but took it upon himself to make this contribution. The money saved will be used to better the company and make it a greater work environment for everyone. We want to congratulate Michael Callejas for his idea. He was awarded $100 for his contribution. Let there be more of these great ideas. So, the reason I'm bringing this up is because, as you guys can see, if you can do the math, save the company $24,000 a year, right? And they gave me $100 one time. And that was a big deal. And this email, if you look at who the email went to, the email went to all. So everybody in the company received that email. Now, I challenge you guys to think about it, right? Like, how encouraging is it as an employee to come up with great ideas, make the company more efficient, bring value, all of that? Is it very encouraging when the reward is literally $100 when you're bringing $24,000 and more of value into the company? It's not so encouraging, right? Because you feel like you're not being paid for your value that you're actually bringing. The company is being rewarded, but you're not being rewarded. So that's why I wanted to show you guys this email, because back then I thought to myself, oh, that's great. I got $100. I remember I took my girlfriend to eat dinner, and that was it. Like, the money was gone. So it's just a reminder that, like, if you use your creativity and bring value here,
it's not going to pay you $100. It can pay you thousands, if not millions of dollars, right? Because you're working for your own business versus trying to build it for somebody else. So hopefully that makes sense. Um, Absolutely. So, Michael, I'll yeah, be doing the translation. yeah, So, go what for it, go for you it. Sorry, said, that was a lot. right? I said a lot there, but That's okay. That's okay. Yeah, if I forget something, I'll ask you again. yeah, Yeah. yeah, for sure. Sorry, I Okay. forgot that you were going to translate, but we go That's for it. okay. So good evening everyone. We have already started the session. I hope आपने अपने सारे टीममेट्स को बुला लिया होगा इस मीटिंग के लिए जल्दी से. So स्टार्ट करते हुए माइकल को अपना एक मेल दिखा रहे हैं जहाँ पे वो अपनी कंपनी में उनकी जो प्रीवियस कंपनी थी जहाँ वो जॉब करते थे वहां पे उन्होंने बहुत क्रिएटिव आइडियाज के साथ जो कि उनका जॉब रोल भी नहीं था बट उसके बावजूद कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपनी कंपनी को लगभग 24,000 ईयरली का जो कॉस्ट था वो रिड्यूस करने में मदद करी थी और उसके लिए उन्हें कॉम्पनसेट किया गया था जो कि था $100 जस्ट वन टाइम. तो वो ये बता रहे हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी से अपनी कंपनी को $24,000 का कॉस्ट था वो रिड्यूस कर चुके थे बट उन्हें सिर्फ एक बार उसके लिए अप्रिशिएट किया गया एक बार उसके लिए उन्हें एक कॉम्पनसेशन बेसिकली दिया गया एक रिवॉर्ड दिया गया जो उन्होंने एक डिनर पे खर्च कर दिया था. उनका कहना यह है कि बेसिकली अगर आप अपने आइडियाज को अपनी क्रिएटिविटी को सही जगह पे यूज करोगे अपने बिजनेस में यूज करोगे या सारा बिजनेस में यूज करोगे तो वो आपको शायद हजारों डॉलर्स अर्न करने में हजारों रुपए की इनकम अर्न करने में आपको मदद करेगा. So with this note, we'll start today's session. And Michael, over to you. Let's move forward with today's session. Okay, awesome, awesome. Yeah. So the request that came in was for building a team and duplicating, right? Like I think that's something that when I go out there, it'll probably be like the primary focus because like let's say that you put a lot of work into something, you can get it to grow, but as soon as the leader or whoever's running the team leaves, if it drops, then it, it it shows you that maybe you didn't duplicate as well as you wanted to, right? Like ideally, when the leader leaves, the team should continue growing, like if that person was still there. That's the idea of duplication. So we're going to talk about that right now. So there are steps to building a team. I've done this training years ago, decades ago. So some of this stuff is going to look a little bit dated, but it still holds true to this day. So steps to building a team. So there's two questions you want to ask yourself when you're building a team. So number one is the obvious question, right? Like, is what you're doing working? Like, is it working? Because if what you're doing is not working and you've been doing it for a month, 2 months, 3 months, and it's just not giving you any results whatsoever, then obviously what you're doing is not working and you need to reevaluate your approach. You need to reevaluate your material, whatever it is that you're showing. You need to reevaluate. Go ahead. I'm sorry. I'm gonna let you translate. Go for it. Yeah. So आज का जो सेशन है, can you go back to the previous slide, please? Yeah, yeah. या सो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेप्स टू बिल्ड अ टीम. ठीक है, हमारा मेन कंसर्न इस टॉपिक को लेकर के था कि आप कैसे एक डुप्लीकेबल सिस्टम बिल्ड करें जिसमें आपकी टीम रेगुलरली बिल्ड होती रहे और आपको अगर आप प्रेजेंट हैं तो आपकी टीम फ्लरिश करेगी ग्रो करेगी ही डेफिनेटली. बट अगर आप एज अ लीडर प्रेजेंट नहीं है तो भी आपकी टीम डुप्लीकेट होती रहे वो एक्शंस बेसिकली डुप्लीकेट होते रहे और आपका काम इन द लॉन्ग रन बिल्ड होता रहा एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह. राइट. सो आज का जो सेशन रहेगा वो प्योरली इस चीज को कंसर्न करेगा कि आप कैसे एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप अपनी टीम में शायद लीडर्स बिल्ड कर सकते हैं और एक डुप्लीकेबल सिस्टम बना सकते हैं आगे ग्रोथ के लिए. या लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, माइकल. Yeah, go for it. If you want to continue here. So I was talking about is what you're doing working, and if you've been doing it for X amount of months and it's not giving you any results, you need to reevaluate your approach, your material, your PowerPoint, whatever it is that you're using, it needs to be reevaluated, right? So with this slide,
यहाँ पे माइकल ये बोल रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि इतने टाइम से, जब जब से भी आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है तब से लेके आज तक अगर आप काम कर रहे हैं, तो आज आपको दो क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है अपने आप से। सबसे पहले कि वो ये कि जो आप कर रहे हैं क्या वो काम कर रहा है, जो भी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है आपका, जो काम करने के एथिक्स है, वैल्यूज है, प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, जो भी आप जिस भी सिस्टम के ऊपर आप बेसिकली काम कर रहे हैं, क्या वो वर्क कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछने की जरूरत है। और अगर वो वर्क कर रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, देन इट्स अमेजिंग। एंड दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछने की जरूरत है, दैट कि आपका जो सिस्टम है, जो बिल्ड किया है, जो प्रोसेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिससे आप अपना टीम को बिल्ड कर रहे हैं, आपकी टीम ग्रो कर रही है, क्या वो प्रोसेस डुप्लीकेटिंग है। क्या आप जो भी कर रहे हैं क्या वो डुप्लीकेट हो रहा है आपकी टीम में। दीज आर द टू क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस है जो आपको आज अपने आप से पूछने की जरूरत है। और यहाँ पे आप इवैल्यूएट करेंगे, री इवैल्यूएट करेंगे आपके प्रोसेसेस को, आपके सिस्टम्स को जो आपने ऑलरेडी बिल्ड किया है। That's it. Exactly, exactly, right. So yeah, so if it's not working, obviously reevaluate things. And then the next question is what you're doing, is it duplicating properly, right? And if it's not duplicating, then truly it's not working long term because you'll always have to come back and rebuild. You'll have to come back and manage. It's very time consuming in the long run. So you want to make sure that what you're doing is working, but truly that what you're doing is duplicating. Yes. So the second question is that what you're doing is duplicating। मतलब आप जो कर रहे हैं वो डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और जो भी प्रोसेसेस आप बिल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देना चाहिए, राइट। एंड अगर वो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दे रहे हैं, जो जो भी सिस्टम्स आपने बिल्ड करे हैं वो आपको ग्रोथ के टुवर्ड्स लेके जाएंगे। अगर नहीं ग्रोथ आ रही है वहां से, तो हमें रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है हमारी स्ट्रैटेजीज को, हमारे सिस्टम्स को, जो सो फार हम काम कर रहे हैं, जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर। यस। Sorry, Charlie was saying hello. Okay. So the first thing when you're starting off your initial group, right? Like in India, I think you guys have already taken that first step, right? Like there's already you guys have some events going, you guys have got some people involved, and now it's just about taking that next step. Like how do you take it from where you're at to, over $10 million in sales? That's the idea, and that's not going to be easy, but it's going to start with a core four. So whenever I'm building a team in anywhere, whether it's in the US or in Mexico or in Colombia or any of the markets that I've developed in the past, you want to have a core four established. ओके, सो आई डू द ट्रांसलेशन नाउ। सो माइकल बता रहे हैं कि जब भी वो किसी भी एरिया में काम करना स्टार्ट करते हैं, जब भी वो किसी भी कंट्री में या कहीं भी काम करना स्टार्ट करते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपनी कोर फोर एसोसिएट्स की टीम बिल्ड करते हैं। सो वो कोर फोर आइडेंटिफाई करना जिनको लेके हम इन द लॉन्ग टर्म अपना टीम अब स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। सो वो अपने फोर एसोसिएट्स को चूज करते हैं जिनके साथ वो काम करेंगे। Right. And the core four, I mean, if you think about it in terms of like a corporate structure, right? Like let's just say that you're the vice president of sales or the vice president of marketing for a traditional, Fortune 500 company. You don't have a million general managers. Make sense? You're going to have maybe six, 10, just a handful of general managers or regional managers, whatever the case may be. It's going to be a core group of people that you're going to lean on and work with day in and day out to tackle any challenge. Because you can't work with everybody all at once. It just doesn't work that way. राइट। सो एग्जाम्पल लीजिए कि आप अपनी खुद की एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, आप एक कॉर्पोरेट सिस्टम अपना बिल्ड कर रहे हैं, आपने एक कंपनी स्टार्ट करी अपनी, जिसको आप बहुत अच्छे रैंक पे, बहुत अच्छी जगह लेकर जाना चाहते हैं। आपने वंडरफुल एमएनसी और कॉर्पोरेट लेवल का ब्रांड स्टार्ट किया है, कंपनी स्टार्ट करी। तो क्या आप जनरली बहुत सारे जनरल मैनेजर्स के साथ काम करना पसंद करेंगे? आप क्या 15 20 25 30 लोगों के साथ लोगों को हायर करेंगे और उनके साथ डिस्कशंस करेंगे, उनके साथ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे? नहीं, राइट। आप शायद 4 6 लोगों को अपनी कोर टीम को चूज करेंगे जिनके साथ आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, जिनके साथ आप आगे का जो कोर लेवल का बिजनेस होगा, जो कोर लेवल का काम होगा वो डिस्कस करेंगे, उनके साथ डिस्कशंस होगी, मीटिंग्स होंगी। और आपको वो बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, खड़ा करना है, वो आप उनके साथ ही डिस्कस करेंगे, राइट। इसी तरीके से आपका ये सारा बिजनेस भी ऑपरेट करता है। यस, Yeah, and I think we already have, like we have, quite a few people on this call. So
you know, we we've already identified some people that are moving and shaking out there. So that's a good thing. But when I get there, we'll be looking out for the next layer of leaders that are going to pop up, right? Absolutely. Okay, so the next step, right? Because it's such a big market, we don't have offices everywhere. Make sense? And it's hard to find office space and, obviously to facilitate trainings or anything like that. So a lot of the things that I did when I was establishing new markets, for example, when I was building in Colombia, it was a lot of it was like in-house. So they had one office in Bogota, but from Bogota to Medellin, which was another market that was really doing well for us, it was you needed to take a flight. So we didn't have another office space. There was no way for people to come over to the office on a daily basis. It doesn't work that way. So we did a lot of stuff in-house. Okay. So we either had like WeWorks small offices, or we just did like literally in somebody's home. We were able to do work out of there. वंडरफुल। सो माइकल बता रहे हैं कि जब इनिशियली वो अपने बिजनेस को, ये सारा बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, सो उस टाइम पे उनके पास एक ही ऑफिस होता था एक स्पेसिफिक लोकेशन में, बट वहां से एक दूसरी लोकेशन थी जहां पे उनका काम बहुत अच्छा हो रहा था, जहां पे उनकी टीम बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, और वहां जाने के लिए उन्हें फ्लाइट लेनी पड़ती थी जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता था। सो उन्होंने मेजरली अपना जो टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस था उसमें होम मीटिंग्स को, हाउस मीटिंग्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया था। वो लोगों के घर जा करके मीटिंग्स करते थे, और क्योंकि अगेन वो उसमें कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, प्लस एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि रैपो बहुत अच्छा बिल्ड होता होगा। सो यही रीजन था उन्होंने अपने इनिशियल डेज में हाउस मीटिंग्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया था, और इस तरीके से आज उन्होंने बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया है। Yes, Megha. Yeah, and I've already been looking at the map. I know that we're going to be doing some stuff in Mumbai, and then New Delhi. It's a long distance. There's no way that you'll be able to build two markets like that. And like I said, the investment's not going to be made to have offices in every location right away. It's going to take some time. Okay. So the next step is doing trainings. So the big thing is just making sure that people are trained properly, that you guys are doing everything compliant, making sure that people know what to say, what not to say, things like that. So these quote unquote like house meetings or whatever, or like in home office meetings, it's really just to do mostly trainings and presentations. राइट। सो अगेन, जब हाउस मीटिंग्स आप करते हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें फैक्ट्स फिगर्स, और बेसिकली प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सारा बिजनेस की। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू ट्रेन योर टीम वेरी वेल, आपके जो सिस्टम होगा, आपका जो प्रोसेस होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से डुप्लीकेट होएगा। Right. The last thing you want is people saying like, I don't know what to do, I have no direction, things like that. When people don't know what to do, they'll slow down and they won't do anything. And we definitely don't want that. We don't have that much time while I'm there, so we don't want that to happen. यस। सो एज अ बिजनेस बिल्डर आपको भी चाहिए कि आपकी टीम कभी ये ना बोले कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ठीक है, सो हमें मेक श्योर करना है कि हम उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन करें, उन्हें कोच करें, गाइड करें, क्योंकि ताकि वो हमें आके ये ना बोले कि मुझे ये नहीं पता मुझे क्या करना है, और उससे क्या होता है कि हमारा काम स्लो डाउन होता है, एंड वी डोंट वांट दैट एज अ बिजनेस। एज अ लीडर आपको भी ये चीज नहीं चाहिए कि आपकी टीम स्लो डाउन हो, आपका काम स्लो डाउन हो। राइट, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट हम अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स दें, प्रॉपर तरीके से उन्हें प्रेजेंट करें, उन्हें सिखाएं कि काम कैसे करना है, एजुकेशन दे पूरे प्रोसेसेस की, कंपनीज की, प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की, सारी चीजों की, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को बिल्ड कर सके, काम को बिल्ड कर सके। Yeah, so a lot of these presentations, initially when I first started doing like the in-house office meetings, I felt like it's not a professional setting and I don't want to bring like a professional like a doctor or like a personal trainer or somebody that has a business, a gym owner or something. I felt like it wasn't professional, but surprisingly like it was fine. They didn't mind. It all depended on how it was set up. Make sense? Like if you're doing like a house office meeting and things are not organized and it's kind of like messy or whatever the case may be, like yeah, it's not going to work out. But if you have your home office set up nicely,
like you have a projector or you have a TV display or you have, like a small office setup. Like, for example, like you have chairs or whatever the case may be. Like, if it looks like a home office, it's okay. And I'll show you some pictures of some of the home offices that we had in Colombia. So are you showing the pictures? Yeah, yeah. I'm sorry. I'll show them in a second. Go ahead. Go ahead. ओके ओके सो माइकल बता रहे हैं कि जब उन्होंने इनिशियली अपने हाउस मीटिंग्स करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे उन्होंने अपने घर पे एक प्रॉपर सेटअप बनाया था हाउस मीटिंग्स के लिए। उन्होंने एक प्रोजेक्टर रखा था, एक प्रॉपर स्पेस था, एरिया था डेस्क के साथ, जैसे वो ऑफिस का जैसे सेटअप होता है उन्होंने वही सेटअप अपने घर पे बना लिया था। और इनिशियली उन्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, थोड़ा सा वो लगता था कि वो कैसे प्रोफेशनल्स को लेकर आएंगे काम में। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, उनको कैसे लेकर आएंगे, शायद वो उनके लिए इतना प्रोफेशनल ना हो। बट सरप्राइजिंगली जब उन्होंने उन लोगों को घर पे बुलाया मीटिंग्स के लिए, वो इनवाइट करते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सेटअप क्या है। वो प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा इन्वेस्टेड होते थे कि वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अप्रिशिएट करते थे अपॉर्चुनिटी को जो माइकल उन्हें प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे इस तरीके का एक सेटअप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे माइकल आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं उनके सेटअप की, जैसे उन्होंने घर पे बनाया था, एक प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा के चेयर्स रखे थे जहाँ पे वो लोगों को इनवाइट करते थे योसाना प्रेजेंटेशन के लिए। तो दैट्स अमेजिंग, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप भी अपने घर पे सेटअप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे लेवल पे अपनी योसाना मीटिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। Yeah, like this was literally somebody's living room that had been turned into like a home office. And I'm just giving you like an example there, but look at the professional setting. Even even the people who came, we were dressed up. Like we weren't dressed up in our home clothes, like street clothes. People were wearing suits. Like it was a very professional setting. So it's all based on like how you set it up. Here's this is an extension of that room. Like you guys can see, it's packed. It was completely packed while I was out there. I'll just show some other photos here. Hang on a second. Check this out. Here, this is an example. Even when people were coming, this is kind of like a display that you guys can see me here. This was in my living room, all right? At the apartment that I was living in while I was in Colombia. But you guys can see like there I am, like dressed up. Look at how registration was. We even had registration. Like yeah, it wasn't like people just showed up and it was random and chaotic. No, no. Like there was a registration sheet, there were name tags, like people were dressed up. And even like if somebody brought someone, there was no excuse. Like you couldn't invite somebody over and they came in street clothes. Like they weren't even allowed. Like if somebody wasn't dressed professionally, they weren't in dress code and they weren't allowed. दैट्स अमेजिंग। सो माइकल बता रहे हैं कि जब वो अपने घर पे भी मीटिंग्स करते थे बट वो सेटअप इतना ज्यादा प्रोफेशनल होता था कि अगर कोई नॉर्मल कपड़ों में, कोई स्ट्रीट वेयर में भी आता था तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था। वो पूरे तरीके से ड्रेस्ड होते थे, बहुत प्रोफेशनली वो अपने आप को ग्रूम करके मीटिंग्स को कंडक्ट करते थे और मेक श्योर करते थे कि जो गेस्ट भी आ रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए वो बिल्कुल फॉर्मली ड्रेस्ड हो, प्रॉपर तरीके से ड्रेस्ड हो। और उन्होंने एक प्रॉपर सेटअप बना रखा था अपने घर पे, ऑफिस वाला। वहां पे वो रजिस्ट्रेशंस भी करवाते थे, नेम टैग्स होते थे जो लोगों को दिए जाते थे एंड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ काम होता था। और यही रीजन था कि उनका जो काम था बहुत प्रोफेशनल लेवल पे बिल्ड हो रहा था। तो अगर उनके पास ऑफिस स्पेस नहीं भी थी वो अपने घर का ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे थे और राइटली ड्रेस थे एज पर द ओकेशन। Right, right. So I think that's fine. Like even think about it. Like if you were working for a company, companies usually have like dress codes, right? Like there's things that are allowed, things that are not allowed. Well, this is going to be no different. We will establish that dress code and make sure that people follow that to the T. एब्सोल्युटली। सो माइकल ने मेक श्योर किया था कि जैसे हर कंपनी का एक ड्रेस कोड होता है, हमारा भी एक ड्रेस कोड होगा और वो ड्रेस कोड फॉलो होना चाहिए। सो उन्होंने इस सॉलिड ग्राउंड के ऊपर अपने सिस्टम को बिल्ड किया था। सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो हम भी ग्रैब कर सकते हैं और इस तरीके इससे आप भी अपने घर पे एक प्रॉपर सेटअप बना करके प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग्स कर सकते हैं। Yeah, and then here's the thing, like you don't want to really just tell people what to do, you want to show them what to do. Right? People don't do what you say, they do what you do. So if you're following it and everybody's following it, that's what's going to duplicate, right? It's not really what people are saying. What people are saying is irrelevant. It's really what people are doing. That's the key.
एब्सोल्युटली। सो अगेन, आप जो बोलते हो वो नहीं होगा, आप जो करते हो वो होगा। इवेंचुअली लोग आपको जो देखते हैं करते हुए वो चीज परफॉर्म करेंगे। राइट। सो जब आप अपनी टीम को कुछ बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करेंगे जो आप बता रहे हैं, वो करेंगे जो आप कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपका सिस्टम डुप्लीकेट होगा, आपकी टीम में वो डुप्लीकेशन होगा। जब आप खुद एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, जब आप खुद चेंजेस लाएंगे, आप जो बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं अपनी टीम को करने के लिए, जब आप वो खुद पर्सनली अडेप्ट करेंगे, अपने एक्शंस में लेकर आएंगे। Okay, so there are the steps, right? And I wanted to show you some photos so you guys can get an idea, but the core four associates, to get those people in, if you already have meetings set up, it's not going to be so hard to get them in because people see the meeting. So you just bring people to the meeting and you can start recruiting and building your team. However, if you live in an area where there are no people, you don't have a meeting. So you have to do one-on-one presentations. That's the way you're going to start. But as soon as you have 4 to 6, immediately you want to transfer to a house meeting. And the reason why is because if you don't switch from one-on-one presentation to house meeting, you're going to burn out. You're going to run out of time. You can only do so many one-on-one presentations in a day. If it takes you 1 to 2 hours to present, think about it. You can do maybe 4 meetings in a day. That's the whole day right there. Talking to 4 people is not enough to make this business work. You need to talk to 40 people a day. And you're not going to talk to 40 people a day doing one on one presentations. You got to do a house meeting. एब्सोल्युटली। सो अगेन, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये कुछ स्टेप्स हैं टू बिल्डिंग अ टीम जो माइकल बता रहे हैं। सबसे पहले हमें फोकस करना है अपने 4 से 6 कोर एसोसिएट्स के लिए, एसोसिएट्स को फाइंड करने के लिए, उन्हें रिक्रूट करने के लिए। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आप किसी को पहचानते नहीं है, या आपको लगता है कि हाउस मीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप इनिशियली वन ऑन वन मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक पर्सन से डायरेक्टली मिल करके उन्हें उसाना अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे, उन्हें रजिस्टर कराएंगे अपने साथ। आप एक दिन में 40 लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते अकेले, आप एक दिन में 4 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपके साथ वो 4 लोग एसोसिएट होते हैं जिनके साथ आपने मीटिंग की, आपने उन 4 लोगों को रिक्रूट किया, वो 40 लोगों को गैदर कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास 4 से 6 एसोसिएट होते हैं, आप अपने घर पे एक के आने का। You're kind of cutting out. I don't know if it's my internet or yours, but you kind of cut out. I think it's It's Anchal. hers, right? Yeah, it's bit of bad connectivity at her place. No worries, that's fine. Okay. Yeah, Yeah. So I'm not sure where she left off. Oh, there she goes. There, she's there. there. Sorry, Anchan. Unstable. Yeah, can you hear me now? You're good. You're good. ओके। सो अगेन, जैसे मैं बता रही थी कि अगर आपके 4 से 6 लोग, 6 एसोसिएट्स जो आपके आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप उनके साथ वो 40 लोगों की मीटिंग प्लान कर सकते हैं अपने हाउस मीटिंग्स के साथ। That's it. Okay, so there are some steps. Once you have your house meeting going, doing trainings and presentations. Now, what's the schedule? Okay. The schedule that I think works well is you want to have 2 presentations for the business per week, minimum. You can do 3 if you have enough demand. Like if you have a lot of people coming, okay, do 3. So usually what I'll do is I'll do presentations on Monday and Wednesday. And if the team is growing and booming, you do Friday as well. You turn on Friday. So then you do Monday, Wednesday, and Friday. Now, the reason why you do it every other day is because you need to allow time for the new people who join on Monday to get some kind of training on Tuesday and invite their friends for Wednesday. You want to give that one day. Make sense? And then you want to have the Wednesday presentation. If you do one presentation a week, it's too slow.
what happens is people will join on Monday, and by the time you do the presentation again next Monday, they already quit. They already stopped. So it's too long. So Monday, Wednesday, that's the way to do it. I'm going to say one more thing, and then if you want to translate. And then training. Training should be once a week. Saturday is a good day to do training in the morning early. I did trainings at 10 a.m. every Saturday. So Monday, business presentation. Wednesday, business presentation. Saturday, training. Now, training, you can't just do one training a week and expect everybody to grow. So the Saturday training is a big training, very specific, very role playing. You do a lot of training on Saturday. In between, though, you want to have fast start training. Fast start training is one page, quick, easy. Somebody joins on Monday, you do fast start training for them the same day or the next morning. You don't wait until Saturday, because by Saturday, if they invited people on Tuesday for Wednesday, they're going to mess up. They're going to make so many mistakes and they're going to quit. Okay? यस सो जब आप स्केड्यूल बना रहे हैं अपनी टीम का, जब आपकी टीम ग्रो करना स्टार्ट कर रही है, फ्लरिश कर रही है, उस टाइम पे आपको एक स्केड्यूल बनाना होगा अपनी टीम के साथ काम करने का, ताकि वो सिस्टम स्मूथली चल सके. सो माइकल यूज्ड टू डू वन मीटिंग. ठीक है, माइकल यूज्ड टू डू दो मीटिंग्स करते थे बेसिकली वो एक वीक में, प्रेफरेबली मंडे और वेंसडे. और यही सेम प्रोसेस हम भी डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने साथ. आप अपनी टीम मीटिंग्स रख सकते हैं. आप अपने टीममेट्स को बोलिए कि वो अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे, और आप हफ्ते में 2 मीटिंग शेड्यूल करिए, मंडे और वेंसडे को. अगर आपकी टीम की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मीटिंग से, तो आप एक और मीटिंग प्लान कर सकते हैं फ्राइडे. अब यहाँ पे आपको बीच में एक दिन का गैप देना जरूरी होगा, ताकि प्रॉपर फॉलो अप हो सके, और जो लोग मंडे को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके. एक फास्ट ट्रेनिंग, हम एक पेज की फास्ट स्टार्ट ट्रेनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं जो लोग मंडे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उन्हें ट्यूसडे ट्रेनिंग मिले और वो प्रॉपरली पूरे वीक अच्छे तरीके से काम कर सके. इसके साथ साथ एक अच्छी बिग स्टार्ट ट्रेनिंग बोल सकते हैं. सो एक अच्छी ट्रेनिंग, आपको लॉन्ग ट्रेनिंग आपको हफ्ते में एक दिन प्लान करनी चाहिए, प्रेफरेबली. जैसे माइकल सैटरडेज को वो ट्रेनिंग प्लान करते थे अपनी पूरी टीम के साथ, एक बड़ी ट्रेनिंग वो प्लान करते थे हफ्ते में एक दिन, जो कि सैटरडे. सो आप भी आफ्टर आवर वीकली क्लोजिंग अपनी एक प्रॉपर सैटरडे ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं. दैट्स अ गुड स्टार्ट फॉर योर टीम. अगेन, ये बहुत अच्छा स्टार्ट होगा जब आप अपना वीक स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे को, तो आप बहुत प्रॉपर मोटिवेशन के साथ पंप होकर के उस हफ्ते को क्लोज कर पाएंगे. एंड अगेन, अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक मीटिंग करते हैं, लेट्स से आपने सिर्फ मंडेज को अपनी मीटिंग करी, और आप मंडे को मीटिंग करके सिर्फ उन्हें ट्रेन कर रहे हैं और प्रॉपर अपने काम में बिजी हैं, तो हो सकता है वो लंबे समय तक सस्टेन ना करे. क्योंकि जब आप एक पर्सन को मंडे को ज्वाइन कराते हैं, तो अगले मंडे तक वो क्विट कर देगा, क्योंकि अगर उसे ट्रेनिंग नहीं मिली या उसकी मीटिंग्स नहीं होती है, राइट. सो इट्स बेटर कि आप अपनी खुद की मीटिंग्स प्लान करें हफ्ते में 2 दिन, मंडे और वेंसडे, और उसके बीच में ट्रेनिंग रखें. ट्यूसडे को आप एक फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग रख सकते हैं, सैटरडे को आप एक बड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे अगेन आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर डुप्लीकेट होगा और बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश होगा. यस माइकल, यू कैन मूव. Okay. Does that help a little bit? Everybody's got that? Okay. Now, let me go over one more thing. So let's say that you're the leader, okay? You're the director or the silver director. Let's say that that's you. So you're doing Monday, Wednesday presentations and you're doing Saturday training. What should you do on Tuesday and Thursday? If you're doing the meeting Monday, Wednesday, and the training on Saturday, on Tuesday and Thursday, you should be doing one-on-one presentations. One-on-one presentations to build another leg. You need to build another leg. You cannot make it with just one leg. You have to build multiple legs, right? So on Tuesday and Thursday, you should be building to duplicate this. And now you can start doing presentations on Tuesday and Thursday for a different group at a different house. So now you have presentations Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Make sense?
Now you're full time. You have everything going. And that's a good thing, because if you need to leave the Monday and Wednesday presentation, you need to leave that meeting eventually. You need to give that to somebody else to do. That's duplication. And you got to tell them, hey, sorry, I can't do the presentation on Monday and Wednesday anymore because now I have another group to work with. Does that make sense? Yes. It's forced into duplication, if that makes sense. यस एब्सोल्युटली सो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जब आप मंडे और वेंसडे को अपनी मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप सैटरडे को अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके पास ट्यूसडे और थर्सडे खाली रहेगा। तो उन ट्यूसडे और थर्सडे को आप अपनी 1-to-1 मीटिंग्स कर सकते हैं ताकि आप अपनी दूसरी लेग्स को बिल्ड कर सके। फिर जब आपके पास वो ट्यूसडे और थर्सडे वाली मीटिंग से नई लेग्स बिल्ड हो रही हैं तो आप अपनी मीटिंग और प्लान कर सकते हैं। अब आपके पास पूरा हफ्ता बिजी रहेगा क्योंकि मंडे और वेंसडे आप एक डिफरेंट ग्रुप के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ट्यूसडे और थर्सडे आप एक डिफरेंट ग्रुप के लिए मीटिंग कर रहे हैं। एंड देन आप अपनी पहली ग्रुप को जो जिनकी मीटिंग आप मंडे और वेंसडे को करते थे आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि मैं दूसरी लेग बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरा ग्रुप है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो यू टेक ओवर, आप टेक ओवर करिए और आप आगे मीटिंग्स लीजिए, आप अपने मीटिंग्स को, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी टीम को बिल्ड करिए। सो इस तरीके से आपका काम जो होगा वो डुप्लीकेट होगा, आपके साथ लीडर्स बिल्ड होंगे जिनको इनिशियली आप हैंड होल्ड कर रहे हैं बट आगे जाके आप उन्हें इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं। This is how you build multiple legs. This is how you go diamond. This is how you grow your business. Okay. All So right. Michael, Now, I have a question here Yeah. related to this, because when we talk to our, brand partners here in India, and looking into that with your experience, India is a new market. It's almost 1.5 years. So there has been a lot of churning around, when people bring in new leaders, there's a lot of time which goes into grooming them and duplicating them. It's taking some time. So what you said, spending Tuesday or Thursdays on their one-to-ones and creating another legs, I think it's a bit of challenge here. But what does your experience say, that how much time does it take, looking into it's a new market and it's a new business altogether here in India? What's your I would say experience? it takes about 6 to 8 weeks at most. Most. At most. If they don't have it in 6 to 8 weeks, Yeah. they're not it. Okay. They're not the one. Now, because remember, Yeah. there's going to be nuanced situations. Nuanced is like unique situations, okay? A unique problem. That's going to happen. But that doesn't take all of your time. The majority of your time needs to be spent on recruiting and training. That's it. That's the majority of your time. If you're spending all of your time dealing with problems, you're not spending your time wisely. Because dealing with problems is not going to make money. Okay? We have to deal with problems. That's understandable. But the best way to deal with the problem is to be successful. Make sense? Make money. Make sure if everyone's making money, there's no problem. You'll see. When everybody's making money, nobody has problems. Somehow everything is just fine, right? Let me move on a little bit and I'll get to that question in a second. I do want to answer that more about the turnaround and how long. In fact, that will be one of the talking points, Michael, when you are here in India. We would definitely want this to be discussed more in detail in our travel program. We will for sure. So this is for people who are building outside of their hometown. So like I put the Zoom thing because you don't want to fly out to do a presentation in another city. No. Do Zoom meetings first. Zoom meetings, get your core 4, and then fly out to do the house meeting. Don't fly out until you have the core 4 first. You're going to spend too much money. You're going to spend too much time. Okay. Do you want to translate that real quick? Yes. So, जब आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं एक दूसरे एरिया में जहां आप नहीं रहते हैं, वहां से दूर जब आप एक दूसरे डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट स्टेट में जब आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं जहां पे आपके लिए
फिजिकली पहुंचना डिफिकल्ट होगा, लेट्स से आपको फ्लाई करके जाना होगा, आपको ट्रेन से ट्रैवल करना होगा, सो उस केस में आप सबसे पहले अपनी जूम मीटिंग्स करिए। जूम मीटिंग्स तब तक करिए, 1-to-1 जूम मीटिंग्स करिए तब तक जब तक आपके पास आपके 4 कोर लीडर्स हो, जो उस एरिया में एज ए लीडर काम कर सकते हैं, आपके साथ कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं प्रॉपरली। सो जब आपके पास वो 4 लोग, 4 एसोसिएट्स होते हैं जो आपके कोर लीडर्स होंगे उस एरिया में, तब आप फ्लाई करके उनके लिए जाइए और उनके लिए हाउस मीटिंग्स का सेटअप करिए, उनके साथ हाउस मीटिंग्स प्लान करिए, और हाउस मीटिंग्स के साथ साथ वही सेम वेंसडे मंडे वेंसडे वाला स्केड्यूल फॉलो करें, जिसमें आप उन्हें ट्रेन करेंगे, आपका काम डुप्लीकेट होगा। इस तरीके से आप एक डिफरेंट मार्केट को बिल्ड कर सकते हैं। Okay, let's move on. So the follow-up plan, enrollments, sales volume points, promotions, and paychecks. That's all I look at. So back to Vikrant's point, when I'm looking at things, I just want to know how many people are we signing up? How many points are we producing? How many promotions did we get? And how many people are getting paychecks? That's it. Those are the only problems we have. If all of those things are good, there's no problem. People are not going to complain. No one's going to quit. Everything's going to keep moving forward. Support in the market. How do you support the market? Tools, personal development, and strong emphasis on inviting and closing. The better you are at inviting prospects, teaching the people how to invite, and the better you are at teaching them how to close, the better the market's going to do. Because here's the thing. Let's just say somebody doesn't know how to build Usana, but they know how to invite someone. That's all you need to know. Because if you have the house meetings already set up and I want to be doing Usana, I just have to go to the house meeting and bring a friend. That's all. See, you make it simple. Make it simple for everybody. But you need to set up the house meetings. Yes. सो माइकल बेसिकली इन चीजों के ऊपर फोकस करता है, उनके पास एक फॉलो अप प्लान है जिसके ऊपर वो काम करता है। उनका मेजर फोकस होता है कि कितनी एनरोलमेंट्स हो रही हैं, उनमें से कितने सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स, एसवीपी जनरेट हो रहे हैं, एसपी जनरेट हो रहे हैं, और उसके बाद कितने प्रमोशंस हो रहे हैं, कितने रैंक क्वालिफिकेशंस हो रहे हैं। और उसके साथ साथ माइकल, कैन वी गो बैक टू दैट स्लाइड प्लीज? Oh, sorry. दैट्स ओके। My bad. Okay, there you go. ओके। सो कितने रैंक क्वालिफिकेशंस हो रहे हैं, और उसके बाद कितने पे चेक्स हैं जो आपकी टीम में जनरेट हो रहे हैं। सो ये एक फॉलो अप प्लान रहेगा आपकी टीम के साथ। बट आप जब एज अ लीडर किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो आप अपने एंड पे क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें? आप कुछ टूल्स जनरेट कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के आप उन्हें टिप्स दे सकते हैं, आप उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा एम्फेसिस सबको करना चाहिए, वो रहेगा इनवाइट। पता है कि वो इनविटेशन कर सकते हैं और हाउस मीटिंग सेटअप है, आपका काम रहेगा हाउस। No worries, Anchal. Yeah, she froze. She's outside somewhere, so maybe, I'm that's so fine. No, that's fine. That's fine. Yeah, Michael. can you hear me now? Yeah, Anchal. ओके। I सो hear you. ऑल वी हैव टू डू इज हमें इनवाइटिंग के ऊपर फोकस करना है। हमारी टीम में जो लोग हैं जो इनवाइटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए आपका काम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अगेन आपके जो टीममेट्स अगर वो नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट्स होंगी, एनरोलमेंट्स होंगी, एसपी जनरेट होंगे, प्रमोशंस होंगे, पे चेक्स। Oh, we lost her. कुल मिला के You want to कुल step मिला in, के pinch hit? I'll speak for it. सो कुल मिला के पूरी बात ये है कि अगर लेफ्ट में जो फॉलो अप प्लान अगर हम लोगों का स्ट्रांग है, अगर हमारी एनरोलमेंट्स आ रही हैं, हमारे सेल्स वॉल्यूम पॉइंट बढ़ रहे हैं, हम प्रमोशंस को अच्छे से अवेल कर रहे हैं, और हमारा कमीशन चेक बढ़ रहा है, आई थिंक दीज आर द राइट सिग्नल्स टू ग्रो फॉरवर्ड, ग्रो फर्दर। ओके, या माइकल, ओवर टू यू।
Okay, let's move on. All right, so always make sure that you're established in your current market. Like wherever you live, hopefully you're very established where you live because it's going to be harder to build somewhere else than where you live. The strategy is have 2 to 4 house meetings, 2 on the left, 2 on the right. You should have house meetings going on in multiple legs. Make connections. Don't be a Usana ninja, meaning don't be quiet about what you're doing. Post your meetings on social media. Post pictures of your meetings. Talk about it. Live broadcast if you have to. Be loud about it. Let people take pictures of what you're doing and where. Like don't be quiet. Don't be a ninja. And then results is the name of the game. The more results you have, the easier it's going to get. Okay? Believe me, the more results you have, the easier it's going to get. All we really need when we're there is maybe 4 people that have big results, and that's going to really build the momentum for the team because people are going to know that it's possible. Absolutely. I don't want to translate that. या सो आई थिंक मैं क्रक्स बता देता हूँ दैट जो हम बोलते भी हैं बार बार कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इफ़ वी आर एस्टेब्लिश्ड इन यूसाना इन द करंट मार्केट, हमें उसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपनी स्टोरी शेयर करिए, रील्स शेयर करिए, बिकॉज ये सब हम लोग फॉलो भी करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर हमने कुछ अच्छा काम किया तो उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को तभी वो पता चलता है। So make connections. Don't be a Usana ninja. I think it's a good word. It's a good line. Make as many connections as you can because this is all about social networking. Strategy उन्होंने clearly बताई है, 2 to 4 house meetings, 2 left, 2 right, and results जो है that is the ultimate fact, ultimate truth, name of the game. Moment of truth बोलते हैं उसको कि अगर results आ रहे हैं that means you're doing the right things. Okay, yeah. Right. Okay, let's go ahead and wrap it up. So when I first started, I started in Los Angeles. Wow. I was doing my house meetings, as you guys can see, right? We were doing them. And then my small group got going. Then I It's a took my small group. operation. It's a big group. It's not small. And then we went to San Jose. This is 400 miles. Oh. 400 miles away. Did another Wow. group. Okay. Wow. Then we opened it up nationwide. We opened up Spanish speaking markets in different states. So it was a new market. It's the same business, but a new market. Okay. Started doing meetings in homes, more meetings in homes. We never did presentations in offices or hotels. The house meeting was so successful, there was no need for it. I don't know if you want to translate that. Anchal, over to you. सो माइकल बता रहा है कि जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उन्होंने कैलिफोर्निया में काम स्टार्ट किया था। इनिशियली उन्होंने हाउस मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी, फिर उनका वो काम डुप्लीकेट होता गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट किया लॉस एंजलिस में इनिशियली। उसके बाद उन्होंने दूसरा मार्केट स्टार्ट किया। अब एक ही कंट्री में, सैन होसे में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और वहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रुप बिल्ड किया। एंड उसके बाद उन्होंने एक नई कंट्री में अपना काम करना स्टार्ट किया, एक नया मार्केट ओपन किया। बिजनेस सेम था, स्ट्रक्चर सेम था, प्रोसेस सेम था। उन्होंने कभी भी ऑफिस में मीटिंग्स नहीं करी, उन्होंने कभी भी होटल्स मीटिंग्स के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हाउस मीटिंग से इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा टीम बिल्ड किया। सो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ईच वन ऑफ अस, क्योंकि हम भी इस तरीके से हाउस मीटिंग्स के साथ बहुत बड़ा युसाना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा बहुत फर्म बिलीफ है इसके ऊपर कि होम मीटिंग्स आर द बेसिक्स। होम मीटिंग्स को कोई भी टेक्निक रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर लें, होटल्स में चले जाएं, ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में चले जाएं, बट होम मीटिंग्स जो होती हैं दे आर द बेसिक्स। जितना हम उसको पकड़ के रखेंगे, आई थिंक विल बी मोर क्लोजर टू द सक्सेस। या Right. So the question is, how many people are joining the industry each week, each month, each year? Well, we know based on one of the last calls that we did that Herbalife is already a $1 billion business yeah, in India. That means that a lot of people are joining the industry.
And that's just Herbalife in India. Kudos to them. Good job. But the question is, how many people are joining your business each week, each month, each year? Right? And that's what we're going to work on when I'm there. We're going to grind it out. Okay. We're going to do presentations. And what I want to do while I'm there, I know we have some events, but hopefully, if you guys are open to it, before I go, we should be setting up the house meeting locations. Make sense? Get it ready so that when we go, I could do the house meetings and you could see how it works so that when I leave, somebody else can do it. Sure. सो अगेन माइकल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने आपसे किया है सबसे पहले तो, कि कितने लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। एक डिफरेंट ब्रांड के बारे में उन्होंने बताया कि वो ब्रांड ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में $1 बिलियन का ब्रांड है। और अगर उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया, बट द क्वेश्चन ये है कि आपके बिजनेस को कितने लोगों ने इस हफ्ते ज्वाइन किया है, इस महीने ज्वाइन किया है, इस साल ज्वाइन करेंगे। सो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एंड माइकल जब यहाँ इंडिया में होंगे तब वो इसी के ऊपर फोकस करेंगे, वो इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हमें ट्रेन करेंगे। और वो मेक श्योर करेंगे जब जाने से पहले वो चाहेंगे कि हम भी अपनी हाउस मीटिंग्स सेटअप करें, वो सेटअप बनाए अपने हाउस मीटिंग्स का, और माइकल हमें उस हाउस मीटिंग के सेटअप में डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। Very nice. Okay, let's move on. Ultimate goal for when I first started doing this is I wanted to be Emerald director. To do that, you need one director in each leg. If you have one solid director in each leg, you're an Emerald director. That's $200,000 a year. That's good money. Okay. Now that's here in the US. I don't know how it works in India, if the compensation plan is different and there's different rules, all of that. But if you have 4 directors that are solid in any country, you should have some level of success. डेफिनेटली। सो माइकल बता रहे हैं कि जब वो एमरल्ड, जब उन्होंने अपना टारगेट सेट किया था, जब उन्होंने अपना ये सारा बिजनेस स्टार्टअप किया था, उन्होंने एक टारगेट लिया था एमरल्ड डायरेक्टर बनने का। और एमरल्ड डायरेक्टर बनने के लिए उन्हें उनकी चारों लेग्स में एक एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। सो हो सकता है हमारे लिए भी यही सेम प्रोसेस काम करे, और हमें भी इस चीज के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। सो हम भी अपनी प्लानिंग इस तरीके से अकॉर्डिंगली अपने रैंक्स को अचीव करने के लिए सेट कर सकते हैं। Okay, we're not going to go over this right now, but I want to show you something for the next one. Okay. So this right here, and you're welcome to take a picture of it. That's fine. You can take a screen capture. This is what you want to focus on at different levels of your career. Okay. Like I'll give you an example really quick. We'll go in detail another training. It's going to be too long. But step 1, when you're sharer or believer, you guys have those ranks, right? In India, like Yeah. sharer, believer, builder, achiever, director, bronze, all that, right? Okay. Yeah. So when you're sharer or believer, what are the skills that you need to work on? Prospecting and customers. How do you build those skills? These are the personal development tools to use. Where are you in the life cycle? You're in this life cycle, which this is not going to make sense, but we'll cover it another time. And then what type of events should you be doing? You should be doing one-on-ones and grand openings. Okay. Step 2, when you're builder achiever, you're focusing on closing and opening, right? What tools do you need? These are the tools. Your first year network marketing, overcoming objections by Michael Callejas. I have an audio that covers all the objections. It's free. All the objections. I don't have the money. I don't have the time. I got to think about it. Every objection. Okay. You should be in pace setter. You should be getting to pace setter by this point. And you should have about 4 to 5 people in your team, small group. And then director bronze. You should be learning how to speak. Vikrant, to your point earlier, you're like, how long before I duplicate? By the time you're director or bronze, you need to be doing presentations. You need to be speaking. And how do you learn how to speak? There are the audios that I recommend and the videos. Okay.
And then when you're silver, you focus on leadership. And that's it. And then rinse and repeat, everybody. So now, depending on where you are, you know what you need to focus on. Like if you're a silver director, you don't need to be focusing on something else. You need to be focusing on this. Hopefully that makes sense. We'll go over this in detail. I think learning, practicing, teaching, and duplicating is the key, you know, which you have mentioned on the right. Absolute right. Yeah. Right. This is- Correct. But if you do a good job of learning, you Yeah. do a good job of practicing, you do a good job of teaching, duplicating should happen automatically. Automatically. Makes sense? Because people are not going to do what you say. They're going to do what you do, right? It goes back to that. That's the duplication. Okay. Don't want to say too much more, guys. Hopefully this was helpful. We'll Wonderful. continue on. We'll continue Wonderful, on. Michael. I think I've noted few points when you will be here in India. We'll be actually, you know, picking up these topics only to take it forward, you know, in details. Correct. We got to put this into practice. See, Yeah. even for us right now, right? Right now, we are studying. We're learning, Yes. right? But when I'm in India, we're going to be practicing. That's what we're going to be doing. We're going to be practicing everything that I'm saying. We're going to do it. We're actually going to do it. We're not going to talk about it. We're going to do it every single day because there's not a lot of time, right? We got to try to get it all done. And then we'll be teaching a few people how to do it. And then the duplication process will go from there. All right, guys. Until you can close it. Yes. So thank you so much, Michael, again for this amazing session. It's a humble request to share the presentation with us. So we can also share it with our teammates, our associate and our readers. And thank you so much. We will be eager to see you in India and we'll talk more about the life cycle that you shared, the 4 stages of life cycle next time. All right. Take care, guys. Thank you so much, Michael. It's always a delight hearing you and looking forward to see you soon here in India. Very soon. Yeah, a couple of weeks. Excited. Thank you so much. Thank All you so right. Take care, guys. आप सब लोगों को नमस्कार. Good evening. Have a nice evening. ध्यान रखिए अपना. Stay healthy with Usana. Bye bye. Bye. Bye, Anchal. Bye, sir. Thank you so much.